As we know, in last session, we started discussing on our business automation and under the topic called BPM, called Business Process Management. In this BPM, we discussed about two things. First one is our workflow, and the next one is we discussed about uh, something called process builder, right? And we know that process builder having some enhanced options and actions than the workflows. We had covered all those things in previous lectures, and today we are going to discuss about the next important thing in your BPM, that is called approval process. Workflow and your process builder is for the business automation. Whenever you want to perform some automatic task or automatic action, we basically use workflow and a process builder. But in approval process, we try to break that particular automation and insert some of human intervention. That's and because of that, your system is going to work smoothly. Okay. अब एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं. Whenever a check is being deposited into the bank, और या फिर आपने किसी को चेक इशू कर दिया है और चेक इशू करने वाले दैट पर्सन इज गोइंग टू डिपॉजिट दैट पर्टिकुलर चेक इनटू हिज बैंक. फिर वो यहाँ पे आता है और फिर आपका बैलेंस चेक किया जाता है. नाउ आपने 1 लाख रुपीज का चेक किसी को इशू कर दिया एंड यू डोंट हैव दैट सफिशिएंट अमाउंट इन योर बैंक. तो क्या होता है, वहां पे ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन नहीं होता है. देन वी रिक्वायर सम ह्यूमन इंटरवेंशन. Okay, why there is requirement of human intervention? Because uh, insufficient balance is not going to take place that particular events to be occurred, and that's the reason we require the human intervention. Where bank क्या करता है, overdraft facilities provide करता है. Overdraft facility, though you don't have that sufficient amount of balance, तो बैंक अपने तरफ से ओवरड्राफ्ट करके उसको चेक को पास कर देता है. सो इट इज बेसिकली गिवन टू द स्टीम कस्टमर. जैसे अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई इंस्टीट्यूट है, आपका कॉलेज है, तो वहाँ को कॉलेज में कॉलेज का जो अकाउंट होता है जो भी बैंक में, वहाँ पे वो स्टीम कस्टमर करके ट्रीट किया जाता है और उनको फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है. सो इन केस अगर कोई सैलरी वैलरी के टाइम पे इशू आता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट उनको अवेलेबल करवा के देता है. तो इट्स सम काइंड ऑफ अ लोन, जो ऐसे ही आपके अकाउंट में आप रिमेनिंग अमाउंट डालोगे तो वो वहां से कट कर लेते हैं, है ना. सो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए मैनेजर की परमिशन की जरूरत होती है. और फिर क्या होता है, ये ऑटोमेशन के अंदर फिर वी रिक्वायर्ड परमिशन फ्रॉम अ मैनेजर, and then that manager gives you an approval, whether they approve or they reject. Okay, so approve किया तो वो ओवरड्राफ्ट बन जाएगा, रिजेक्ट किया तो ओवरड्राफ्ट नहीं बनेगा. दैट डिपेंड्स कि इनको अप्रूव करना है कि रिजेक्ट करना है, वो मैनेजर डिसाइड करता है. तो अब देखो, ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है. चेक गया, चेक ने बैलेंस चेक किया, और जनरली क्या होता है, इनसफिशिएंट अमाउंट चेक गैस में डिस्क्लोज. तो ये नहीं होना चाहिए, चेक बाउंस नहीं होना चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन इंटरवेंशन यानी कि अप्रूवल प्रोसेस ऐड कर देंगे. इफ सच सिचुएशन विल ऑकर, देन दैट केस इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू द बैंक मैनेजर. और बैंक मैनेजर क्या करता है, विल बी चेक कि इनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते. इफ ही थिंक कि ये अच्छे कस्टमर है, हम उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकते हैं, ही इज इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो क्या करेंगे, आपको अप्रूव करेंगे. अदरवाइज आपका मैनेजर आपको रिजेक्ट करेगा. और such kind of human intervention is going to be taken place by using this approval process. Now let us try to understand what is approval process and how this approval process is going to be take place in a Salesforce. So the first and foremost important part is there, that is user. This user is going to perform some kind of an action
and that action is going to be considered as a transaction by the Salesforce. Now this Salesforce server consider this transaction into an event, and what kind of event is actually going to perform on a Salesforce server. Then there are three kind of event is going to be performed on a server. First one is create record. When the record is created, it could be considered as a event. When record created or edited, then that situation is also considered as an event. And third आता है create, edit a record to subsequently meet the rules. And we already gone through this event in a workflow. Then these events will occur. Then we are going to check some rules. Okay, so whenever this event occur, we check the rule against this event, and these rules is of two type. Basically, it is criteria based and formula based. If you want to apply some criteria, and if that criteria meets, you are going to perform some action, then we use a criteria based rule. And if you want to perform some calculation, then we use formula based rules. If this rule is true, if the evaluation of this rule is true, then we go for the submit for approval process. Now, अभी यहाँ तक before this block submit for approval. This is the common thing which you gone through in workflow also. और यही सारी चीजें अप्रूवल प्रोसेस में सिर्फ अभी डिफरेंस यहाँ से आएगा. Once the rule has been changed or checked as a true, then it is going for the approval submission. And these are two type of submissions. Either you get approved your submission or you get rejected, right? वहां पे एक्शन परफॉर्म होती थी, यहाँ पे अप्रूवल के लिए जाएगा, तो अप्रूव्ड एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा अप्रूवल. नाउ व्हेन दे एक्सेप्ट और रिजेक्ट, तो वो नोटिफाई करना पड़ेगा कस्टमर को कि आपका फॉर एग्जांपल ओवरड्राफ्ट के लिए गया है, तो मैनेजर ने एक्सेप्ट किया है कि रिजेक्ट किया है, वो हमको बताना पड़ेगा बाय टेकिंग एन एक्शन. तो अप्रूवल एंड रिजेक्ट कैन बी टेकन, and based on that action is going to be performed, and that action is of four types. बहुत ही limited actions हम लोग यहाँ पे perform कर सकते हैं. First one is you are assign a task. You can assign a task if you accept or reject a particular approval. You can send an email, then you can update a field, and lastly we have outbound message. Basically outbound message approval process में आता ही नहीं है, but in some cases जहाँ पे बहुत necessary होगी वहाँ पे हम outbound message करते हैं. So we already talk about all those things. अभी अप्रूवल प्रोसेस को क्रिएट करके देखते हैं और देखते हैं कि हाउ we are able to create approval process, how this approval process is behaving. Let's go to your developer org, and in this developer org, what I'm going to do now, I'm going to search for approval process. Now, in this quick find, I'm going to search for approval process, and you can see that process automation के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है called approval processes. You just open by clicking on that particular option. Once you open the approval processes, you can read approval are complex business processes that require information gathering and planning before implementing. It recommended that you follow the instruction below before getting started. So यहाँ पे instructions दिया है, वो आप read कर सकते हो. I'm going to tell you what are the instruction. So directly यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं. So we know that anything, any action, anything in this Salesforce is taken place against your object. Okay, so we required object, and against that object, all those activities going to be performed. Similarly, approval process is also going to be performed against the object. So we need to choose that object. So I'm going to choose the object. Now, as we work on course, so here also I'm going to choose uh, object as a force for my approval process. Now, here you can see we have a button popped up over here called create a new approval process.
because we don't have right now any approval process not in an active or inactive state. That's why nothing has been displayed below this section. So what we are going to do, we are going to create our new approval. So to do that, I'm going to select this drop down. Now you can see there are two options available over here. One is use jump wizard and second is use standard setup wizard. If you use jump start wizard, तो इसको अगर आप क्लिक करते हो तो कुछ वैल्यूज होती है वो बाय डिफॉल्ट सेट किया जाता है अप्रूवल प्रोसेस की तरफ से। और अगर आपको वो वैल्यूज बाय डिफॉल्ट सेट नहीं करना है, आपको खुद को सेट करना है, देन यू कैन सिलेक्ट द सेकंड ऑप्शन, राइट। सो यू कैन यूज एनी टू ऑप्शन और अल्टीमेटली दोनों एक ही जगह पे लैंड अप होने वाले हैं कुछ स्टेप्स के बाद में। सो स्टैंडर्ड सेटअप के अंदर क्या होगा, वी नीड टू सेट ऑल दोज डिफॉल्ट पैरामीटर and if you use this jump start wizard then that parameter is automatically set default by the Salesforce org. So what I'm going to do now, I'm going to choose this first option called use jump start wizard and let the Salesforce define all the default parameter. Now next we need to define a name to this particular approval process. Let's say AP1 for the approval process. Unique name will automatically pop up based on the name. Now you need to choose an email template, right? So whenever this approval process is going to be submit, जब भी कोई रिकॉर्ड अप्रूवल के लिए आएगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि वेदर वी गॉट दैट अप्रूवल और नॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, असाइनमेंट का एक ईमेल भेजेंगे। सो आई एम गोइंग टू चूज अ टेम्पलेट फ्रॉम हियर। here we have various templates available for the email। आप कोई भी अभी समझने के लिए आप कोई भी चूज कर लो, बाद में क्या होता है हमको हमारे टेम्पलेट्स नोट डाउन करने होते हैं एंड देन दैट टेम्पलेट्स वी नीड टू चूज फ्रॉम हियर। सो फॉर अ टाइम बीइंग समझने के लिए हम लोग इसमें से कोई भी एक लेट्स से टेम्पलेट चूज कर लेंगे। सो वी आर गोइंग टू चूज दिस। सो let's say case assignment notification. So I choose this case assignment notification. Then we need to apply some specific criteria, entry criteria, as we know that we need to apply the rules. Okay, and rules is criteria based and formula based. You can see this entry criteria is also having a two options. One is criteria are met and formula evaluate to true. So based on your कंडीशन आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। आई एम गोइंग विद द क्राइटेरिया मेट। अब क्या करेंगे, इधर से फील्ड चूज करना है। सो आई एम गोइंग टू चूज अ फील्ड फ्रॉम द कोर्स ऑब्जेक्ट एंड आई एम गोइंग टू चूज फील्ड एज अ कोर्स फी एंड आई अप्लाई इक्वल्स टू 999। तो अब क्या होगा, whenever the course fee is equals to 999 this approval process get activated और ये अप्रूवल के लिए जाएगा। Now what I need to do, I need to select this approval। अब अप्रूवल प्रोसेस जैसे मैंने बोला कि ओवरड्राफ्ट के लिए अप्रूवल प्रोसेस किसके पास में जाएगी, मैनेजर के पास में जाएगी। सिमिलरली जो भी अप्रूवल प्रोसेस आप लिख रहे हो वो अप्रूवल प्रोसेस कौन से यूजर के पास में हमको भेजने का है, ये हमको यहाँ पे सिलेक्ट अप्रूवर में सेट करना पड़ेगा। And to do that, we have four options with us. One is let the submitter choose the approver manually। अगर ये आप चूज करते हो तो whenever you go for the submission, तो वहां पे आप क्या करोगे, आप अपने हिसाब से अप्रूवर को चूज कर पाओगे मैन्युअली। सेकेंड इज ऑटोमेटिकली असाइन एन अप्रूवल यूजिंग स्टैंडर्ड और कस्टम हायरार्की फील्ड्स। तो यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट द सेकेंड ऑप्शन। ऐसा करने के बाद में आप यहाँ पे हायरार्की में सिलेक्ट कर लो लेट्स से मैनेजर एंड अबव, वो सारी चीजें सॉरी वो रोल में जितने भी लोग होंगे वो सबको क्या हो जाएगा, ये अप्रूवल के लिए जाएगा। सो उनमें से कोई भी आपका अप्रूव कर सकता है अप्रूवल। देन नेक्स्ट इज ऑटोमेटिकली असाइन टू अ क्यू। अब हमने क्यू क्रिएट किया था, उसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली नंबर ऑफ यूजर्स को असाइन किया था, तो उनमें से कोई भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो सकता है रैंडमली। तो अगर आपको ये चाहिए तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, बट आई एम गोइंग विद द फोर्थ ऑप्शन कॉल्ड ऑटोमेटिकली असाइन टू अप्रूवर।
और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, असाइन अप्रूवर, तो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द अप्रूवर। तो मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ही चूज करता हूँ, बोलता हूँ कि आपको ही अप्रूव करना है। And when multiple approver are selected, if you select multiple approver, you can select by using this add a role link over here. You can click and select a user. Okay, similarly, है ना, तो अभी देखो दो दो अप्रूवर आप लोग लिख सकते हो। तो इफ यू वांट टू ऐड न्यू अप्रूवर, तो आप मल्टीपल अप्रूवर यहाँ से ऐड रो से ऐड कर सकते हो। राइट नाउ आई एम नॉट कंसिडरिंग द सेकेंड इंस्ट्रक्टर ओवर हियर, सो एक ही इंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। नाउ व्हेन मल्टीपल अप्रूवर आर सिलेक्टेड, तो क्या एक्शन होनी चाहिए, अप्रूव और रिजेक्ट बेस्ड ऑन द फर्स्ट रिस्पॉन्स। अगर आपके पास में दो लोग हैं, दोनों में से जो पहला रिस्पॉन्स करेगा वही अप्रूव वही रिजेक्ट कंसिडर किया जाए, या फिर रिक्वायर एनोनिमस अप्रूवल फ्रॉम ऑल सिलेक्टेड अप्रूवल। मतलब दोनों अप्रूवर अगर अप्रूव करते हैं तो ही एक्शन आएगा, दोनों अप्रूवर अगर अप्रूव नहीं करते हैं तो रिजेक्शन आएगा। सो यू कैन चूज दोनों यानी मल्टीपल्स। ओके, तो दो से ज्यादा भी आप यहाँ पे यूजर्स को ऐड कर सकते हो। So you can choose any one of the options. So I'm going with the first option because I had choose the I had choose only one approver over here. Then finally, I need to click on save to save this particular approval process. And there is one message popped up over here. If you read that message carefully, then it shows that remember, you will not able to use this approval process until it has been activated. So this approval process is so kind to us that it will give me an notification that we should activate our approval process, otherwise it is not going to be in consideration. Meanwhile, आपने प्रोसेस बिल्डर भी देखा है और वर्कफ्लो भी देखा है। In that particular situation, we don't get such kind of a message to activate that particular things. But this approval process is so kind enough that it will give me a message that we need to activate this approval process whenever I create or whenever I want to use this approval process. Now go and select the last option. Now you can see we have various things with us. Now we create approval process AP1, and the criteria is when the course fee equal to 999. Who can edit this particular record, that only administrator। अब ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली जंप स्टार्ट विजार्ड में ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट सेट किया गया है बाय अप्रूवल प्रोसेस। इफ आई वांट टू चेंज दिस पर्टिकुलर settings, then we have an edit option with us. So whenever you click on edit, you are able to change this record editability, and you can see all those stuffs are there. And we also send an email for approval process. Whenever it is going for the approval process, it is going to send the email। Now you can see we have something below this particular things। तो अभी आप देखो initial submission, whenever there is an initial submission, तो record lock हो जाएगा। Now we can set our action also। Let's set the actions, and that action is based on task, email, field update, outbound message। तो ये इनमें से कोई भी टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं। So whenever we click for the initial submission, what we are going to do, we are going to perform some action, and to do that I am going to select the field update। तो मैं field update कर दूंगा। Now I need to give as a FU for the field update, let's say one, unique name, description, field update। I am going to update the course fee, and I'm going to make this field as a blank। Okay, now you can see we have various options। We can calculate the values, but right now I'm not interested to calculate a value। Whenever it is going for the initial submission, तो उसकी वैल्यू मैं ब्लैंक कर दूंगा, तो मुझे समझ में आएगा कि वो सबमिशन के लिए गया है। एंड देन आई एम गोइंग टू सेव दिस। Now the initial operation has been set over here। Now approval steps, so you can see there is approval steps already been mentioned over here। Okay,
तो इसको आपको ऐड करना है तो आप न्यू अप्रूवल स्टेप ऐड कर सकते हो, बट ऑलरेडी एक अप्रूवल स्टेप यहाँ पे है, सो आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट न्यू अप्रूवल स्टेप। तो दो दो तीन तीन अप्रूवल स्टेप्स अगर आपको रखने हैं तो आप कर सकते हो, बट आई एम हैप्पी विद द वन स्टेप। अगर आपको करके देखना है देन आई विल शो यू हाउ टू सेट द approval steps. So to do that, you just need to click on new approval step. Just to demonstrate, I am going to do that, and once I done with this, I am going to delete because I am not interested in step 2. Let's say step 2, unique number. This is the step number 2. Let's click on next. Once you click on next, you can see whether you want to apply these particular steps on all records on whenever the specific criteria are met. So I would say सभी records पे मैं second steps apply करना चाहता हूँ, so I need to choose this and click on next. Now you can see you need to apply the approval. So let's select the last option, and I'm going to select the host instructor as well. Then नाउ स्टेप 1 के साथ में आप स्टेप 2 एंड ऑपरेशन के साथ यूज करना चाहते हो, मतलब बोथ ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड मैंडेटरीली। अगर ऐसा है तो ये फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है, otherwise you need to select the second option. Okay, now let's click on save. So you can see the approval process has been, or the step number 2 has been created successfully. Once it created, it will ask you, do you really want to perform any action relevant with that step? You can assign that particular thing from here. You can select this field update, go, I would say FU9, let's for a while. And I'm going to update a force field, and I'm going to use a formula. I would set that value to 500. Need to check the syntax. So that value is 500 now, and save this. Once you do that, you can see we have a second step with us. Once the first step has been done, so second step ये वाला आएगा. So I am not really interested right now, but मैंने आपको demonstrate करने के लिए बताया था कि how to set the new approval step. तो ये approval step के लिए जाएगा, फिर ये वाला step के लिए जाएगा. तो ऐसे आप मल्टीपल स्टेप्स यहाँ पे लिख सकते हो. So right now I'm not interested, so that's why I'm going to delete this step number 2 for a while. Now, once the process has been submitted for the approval, तो final approval जब आएगा है ना, so there are two kind of an possibility. The first possibility is either you accept that approval or you can reject that approval. So अब क्या करना है, अगर एक्सेप्ट हुआ तो क्या कर सकते हैं, यू कैन परफॉर्म एनी वन ऑफ द एक्शन विच इज मेंशन ओवर हियर। और रिजेक्ट हुआ तो भी आप ये चार में से कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो फाइनल अप्रूवल यानी कि अगर अप्रूव हुआ तो, फाइनल रिजेक्शन यानी कि रिजेक्ट हुआ तो आप क्या कर सकते हो, वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। सो आप देखो, टास्क क्रिएट कर सकते हो, ईमेल अलर्ट दे सकते हो, फील्ड अपडेट दे सकते हो। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, आई एम गोइंग टू ईमेल अलर्ट देंगे हम लोग। लेट्स से ईमेल ईमेल अलर्ट 1। Let's choose an email or template from here. Let's product inquiry, and whom I am going to send this email. Then I need to choose a user from here. You can also choose roles and subordinate roles, public groups, queues, वो भी select कर सकते हो. But right now I'm going to initially assign to host instructor, and then finally I need to click on save. Now you can see we initiate the approval action as an email alert. Similarly, we can also create a multiple actions on a final approval. तो अभी email आ जाएगा, email आने से हमको पता चल जाएगा whether it is approved or not. But
यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने इनिशियली सबमिशन करते हैं उसका प्राइस 0 करके रखा है. So we need to set some values. That's why I'm going to add one more action over here. I'm going to use field update. Let's say FU2, and I'm going to select the field that is course. And if it is approved, then I'm going to set the value of that particular course to 6,000 rupees. That's all. And I'm going to save this. तो ये हो गया अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल. नाउ अगर रिजेक्ट होता है, तो रिजेक्ट होता है तो हम क्या करेंगे, हम फील्ड अपडेट करेंगे. किस फील्ड को अपडेट करेंगे, कोर्स फील्ड को ही अपडेट करेंगे. लेट्स से FU3. So I'm going to update the course fee. I'm going to use the formula, formula, and here I'm going to set a value 500. If it is rejected, then the your course fee is 500. If it is accepted, then the course fee is 6,000 rupees. Right? Let's click on save. Now we have set all the steps. Initial submission में क्या होगा, approval steps के कितने steps होंगे, approve हुआ तो क्या action होनी चाहिए, reject हुआ तो क्या action होनी चाहिए, and recall actions पे हम लोग लिख सकते हैं, but right now I'm not interested to do any action on recall action. So with this I have done my approval process. और हमको पता है कि approval process ने बोला है कि if you don't activate this, then it is not going to be considered. तो अभी हम लोगों को करना क्या है, we need to activate this approval process first of all. So let's click on activate to activate this approval process. Once you activate this approval process, now we go to our SaaS site, that is our application. So to go to your application, go to your app launcher and search for your application called TMS. And in this TMS, I need to go to the courses. And in this courses, I'm going to select one of the course, let's say C005. And I'm going to edit this particular course fee from 2,500 to 999, because the approval process criteria made on 999. So I'm going to save this. Once I save this, you can see there is a button appeared over here called submit for approval over here, right? So whenever we do that and that criteria met, you will get that button. अब ये बटन किधर आएगा, ऑन द राइट हैंड साइड ड्रॉप डाउन, न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में ड्रॉप डाउन है, उसमें सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आएगा. So whenever you do met that condition, you need to submit for the approval. So once I click on submit for approval, you can pass the comment, otherwise ignore this and click on submit. Once you do that, you can see the course fee has been vanished out, it is blank. तो हम लोगों ने सेट किया था इनिशियल अप्रूवल पे, हमने सेट किया था वी अपडेट द फील्ड टू द ब्लैंक. नाउ वंस यू सबमिट फॉर अप्रूवल, तो ये लॉक हो जाएगा, राइट? इट इज लॉक. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, as an system administrator, I need to approve or reject this particular thing. So I need to go to my home, and in this home I need to check for my approvals. Okay, कहाँ पे आता है? Thank you. Okay, wait a minute.
submit for the approval. Let me check where it is submitted or from where I got this. Now you can see I got the notification. You can go through that notification also, and here you will see that approval is there. Okay, ये approval के लिए आ चुका है. You can either the either approve this particular course, or you can reject this course, or you can reassign this course. So being an host instructor, I am able to approve, reject and reassign. So मैं क्या करूँगा, इधर जाऊँगा कोर्स में, कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे देख लूंगा कि कैसा कैसा कोर्स है, एंड देन आई डिसाइड वेदर शुड आई अप्रूव और नॉट. एंड इफ आई वांट टू अप्रूव दिस, तो अप्रूव के लिए हमने क्या किया कि दो एक्शंस बेसिकली सेट किया था. पहला एक्शन था कि जो कोर्स फी है उसका फील्ड अपडेट हो जाएगा 6,000 रुपीज, और दूसरा मुझे ईमेल आ जाएगा. सो लेट्स सी वेदर वी गॉट द ईमेल एंड फील्ड अपडेट्स when we approve this or not. Okay, so let's approve. So let's click on approve. Let's comment excellent course, and let's click on approve. And you can see this course has been approved. तो यहाँ पे approved लिख के आया है notification के अंदर. And if you go to my course, and if I open that particular course, now you can see the course fee has been set to 6,000 rupees. And if I go to my email ID, and if I check my email, then I will get the email also. So whenever approved has been done, वहाँ पे दो actions लिखे थे, दोनों actions now you can see thank you for inquiry, right? This is the mail which I get. और ये फर्स्ट मेल है, जैसे अप्रूवल के लिए जाएगा तो ये वाला मेल आएगा, क्योंकि वो ईमेल टेम्पलेट सेट किया था, और इंक्वायरी का मेल हम लोगों ने सेट किया था फॉर द सेकंड एक्शन, अप्रूवल एक्शन. तो यू कैन सी द कोर्स अंडर द रिव्यू गया, वहाँ पे अप्रूव हुआ. अप्रूव होने के बाद में उसका कोर्स फी भी अपडेट हुआ, मतलब टास्क परफॉर्म हुआ. सिमिलरली वी गॉट अ ईमेल. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, नाउ आई एम गोइंग टू once again change the course fee, and let's go for another submission. So I'm going to submit this for the, जैसे हम लोग जाएंगे this time I'm going to reject that particular field. Okay, so I'm going to refresh this. Look like there's something here. Now you can see we have a notification with us. You just open that notification. Now once again it is for submission. आप अप्रूव भी कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, रीअसाइन कर सकते हो. दिस टाइम आई एम गोइंग टू रिजेक्ट दिस कोर्स, ऐड मोर कंटेंट. लेट्स से ऐड दिस कमेंट एंड लेट्स रिजेक्ट दिस टाइम. नाउ हम लोग रिजेक्ट कर जब करते हैं तब हम लोगों ने लिखा था रिजेक्शन पे कि जो कोर्स फील्ड होगी, फी का फील्ड होगा, वो सेट. Now you can see this is course C005 digital marketing, and the course fee is now set to 500 rupees. To open this particular course, right, and you can see the field has been updated to 500 rupees. And if you go there in the related, now you can track the history of your approvals. तो अप्रूवल हिस्ट्री है स्टेप 1. ये आप पहले सबमिशन के लिए गया, सबमिशन के बाद में ये अप्रूव हुआ, फिर ये वापस सबमिशन के लिए, और यहाँ पे ये रिजेक्ट हुआ. सो यहाँ पे आपको कंप्लीट हिस्ट्री रिलेटेड वाला जो टैब है वहाँ पे मिल जाएगा. तो आपने जो भी वैल्यू सेट अनसेट किया था वो सारे के सारे एक्शंस यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं. सो विद दिस वी हैव कवर the business automation step number 3 called approval process.